Okay, so am I audible clearly? Yes? Any problem? Okay. So, good evening, everyone. So, in the last class, we were discussing the Miller indices, right? Uh, I gave you homework, and around 15 or 16 students have sent me back. What about remaining one? Because class strength is nearly 50 students. बाकी सबने क्यों नहीं किया? सी होमवर्क तो सॉल्व करने के लिए होता है ना. ठीक है. ओके. Okay, okay. So let's start with today's class. See, till now what we have seen, we have planes and we have just find out the Miller indices, right? Till now what we had the planes, and we had find out the Miller indices. Okay, Miller indices. This is the first type of question. Okay, first type of problems. Now the second type of problem, just reverse of this. That means Miller indices will be given, and we have to find the, means we have to draw the planes. Okay, so this will be our some second type of question. Okay, so this first type of question we have done in last class and the homework also. So let's do some this type of problem where Miller indices will be given, and we have to find out we have to draw just the plane. Okay, so let's start with this. I am making a I am giving a Miller indices here. Let's suppose the first indices is 1 1 0 and the second one is 1 1 1. Please everyone kindly draw the planes on the notebook. I am drawing here. Okay, so obviously this will be our y-axis, this will be our x-axis, and this will be our z-axis. Okay, let's suppose this is our origin. See, first of all, in this type of problem, what we have to see, Miller indices here is given. Okay, Miller indices यहाँ पर दिया हुआ है. So first of all, we have to find the intercept. Okay, we have to find the intercept. Obviously, it is quite known that what will be the intercept while looking this Miller indices, because you people have got the practice of the question. But if there is any random question, so how will you find the intercept from there? So I am showing you. See, I told you that is h is to k is to l, and that what is equal to what? The lattice parameter divided by the intercept. This is a cubic system, so this will be what? A divided by, let's suppose the intercept A, B and C. A upon OA is to A upon OB is to A upon OC. Okay, just equate with the Miller indices. So what will you get? You will get OA is equals to what? A by H. OB is equals to A by K, and OC is equals to A by L, right? Right? What is the value of HKL here? 1 1 0. That means the OA, intercept OA will be equals to how much? A. OB will be also A, and OC will be infinity. So this will be your intercept. Now, look at this
प्लेन। अब हमें यहाँ पर ना एक प्लेन ड्रॉ करना है बाय यूजिंग दिस मिलर इंडिसेस। सो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज ओ ए। ओ ए कितने डिस्टेंस पे जा रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस ओ ए कटिंग? एट द डिस्टेंस ए, दैट मीन्स this complete distance. Okay, this complete distance. At what distance OB is cutting? A. This will be your OB. Okay. At what distance OC is cutting? It's not cutting. Okay. Along the Z axis it will be parallel. Infinite को touch करेगा. So it will be your means like this. You can make your plane. Say. This will be your plane. Understood? क्या यही प्लेन होगा? Sorry? No. See, it's देखो बी को कंसीडर किया है ना, बी को तो हमने कंसीडर किया है। दिस प्लेन इज कटिंग एट द बी मींस एट व्हाट डिस्टेंस? ए। वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस कटिंग ऑन द वाई एक्सिस? एट द डिस्टेंस ए। दिस इज द कटिंग हियर। एट व्हाट डिस्टेंस इट कट द एक्स एक्सिस? एट द डिस्टेंस ए। तो ये हमारा प्लेन हो गया, सिंपल। दिस विल बी आवर प्लेन। जेड एक्सिस को कहां कट कर रहा है? इन्फिनिटी पे कट कर रहा है। इट इज कटिंग द ओके यस। Now, just solve this 1, 1, 1. It is quite easy. I gave you in the homework also. Right? Just solve this one. Everyone just draw. It's quite easy, in fact. First of all, make the axes. It is y. This is x. This will be z. Let's suppose this is origin. Okay. Again, you will find the intercept by that process. So the intercept along x-axis will be how much? A. Okay. Intercept along x-axis will be A, along y will be A, and along z will be also A. It is clear for everyone, or should I find out by using HKL? It is clear for everyone? Okay, just make this plane. It's quite easy. At what distance is cutting the A? X-axis at the distance A, in this point. At what distance is cutting the Y? At distance A. At what distance cutting the Z? At the distance A. Okay, so this will be your plane. Okay, this will be your plane. It is clear for everyone? Clear है सबको? Okay, so yes. So yes. Any question? Okay. So let's find out some more problem. Let's see solve some more problems. Okay, I am giving you a Miller indices, that is the third one, 1, 1 bar 0, and the fourth one is 6, 3, 2. Just make on your notebook. Just draw the planes for this Miller indices, 1, 1 bar 0, and 6, 3, and 2. What will be the plane? Let's find out. Okay. First of all, tell me, what will be the intercepts? What will be the intercepts? A minus A. Okay. So the intercept will be along x-axis, it will be obviously A. Along y, it will be minus A. And along z, it will be infinite. Okay. But
अब यहाँ पर आपको ओरिजिन कैसे लेना है, सी okay yes it will be shifted because negative sign आ गया है ना, there is a negative sign, negative a in the y direction, so means देखो I'm telling you if anyone has confusion regarding the negative or shifting the origin, I'm telling you a very simple thing. While making the plane we have to make the way for us, हमें अपने लिए रास्ता बनाना है, ऐसे समझ लो आप. Okay, we have to make the way for ourselves. See, if we are standing here, if we are standing at this point, if we are standing at this point, let's suppose this is our origin. Okay, it's fine, we can move through the distance a, it is quite obvious. But whether we are able to distance at whether we are able to move the distance minus a, no, minus a पे आप कैसे move कर सकते हो? Okay, so basically we have to make a way for ourselves, हमें अपने लिए रास्ता बनाना है. So how it will be made? It will be like this, that if we choose the origin here at this point, or if there any other point where you are getting, or means if you are satisfied with all the three conditions, then you can take the origin there also. But the first priority is we have to make the plane in this unit cell. Okay, so this is our origin. Okay, so this will be the y-axis, this will be our x-axis, and the upper one will be z-axis, and this is our origin. ठीक है? Now it's quite means easy from here. At what distance it cutting the x-axis? At the distance a, this will be the distance. Okay, at what distance is cutting the y-axis? Minus a, that is this distance will be, ये distance होगा ना इसका. And at what distance is cutting the z-axis? Infinite, yes. Okay, it does not cut the z-axis. So what will the plane? Whether plane will be look like this, means it was quite like this. Okay, this type of plane will be made here, this type of plane. Okay, कुछ ऐसा plane ये दिखेगा. Actually, if you remember, we have solved this in a homework also, if you remember, or in the class, last class. 1 1 bar 0 को हमने यहाँ पर draw किया था in last class. Okay? हाँ? कैसा plane? Sorry? Floor का plane? ये वाला? देखो अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो ना, इफ यू आर मींस इन कंफ्यूजन दैट वेदर यू आर ड्राइंग अ करेक्ट प्लेन और नॉट, इट इज अ वेरी सिंपल वे दैट जस्ट टेक द एनी अदर प्लेन विद पैरेलल टू दिस प्लेन. 1 1 बार 0 के पैरेलल एक और दूसरा मतलब एक प्लेन ले लो, लाइक 2 2 बार 0 ऐसा करके एक प्लेन ले लो, और means उसके बाद उसको ड्रॉ करके देखो. इफ दे बोथ आर द पैरेलल देन यू कैन बी श्योर दैट यू हैव मेड द राइट प्लेन. आई गेस this will be the quite this could also be the right one. ये भी एक प्लेन ऐसे हो सकता है. it will be actually this will be a complete plane. ये होगा पूरा प्लेन, this will be the complete plane. भाई हमने इसके नीचे लिया है ना, तो ये भी हमारा पूरा कंसीडर होगा. this will be our complete plane. Understood? Okay, now yes, हाँ, सी देखो दो चीजों को आप मतलब मीन्स आई वांट टू से कंफ्यूज मत हो. ओरिजिन हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? व्हाई वी आर शिफ्टिंग द ओरिजिन? जस्ट बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ द प्लेन. अगर हम ओरिजिन पर ही रहते हैं, लेट्स सपोज वी आर ओरिजिन, तो हाउ विल वी ड्रॉ द माइनस ए? माइनस हम नहीं बना सकते ना, इस कहाँ आप ले लोगे? आप ले सकते हो, यू कैन टेक, बट यू विल बी इन द अनदर यूनिट सेल. You will be in the another unit cell, but that will be incorrect, right? The first priority is that we have to draw the planes in this unit cell. That's why we are shifting the origin. Shifting origin करना कोई नियम नहीं है. That is, we have to shift the origin, but we are shifting because we have to draw the plane. Origin shift करने से हमारा काम आसान हो जाता है, हमें plane दिखने लगता है तुरंत. Okay, this will be our plane. Just draw that. बस ये है.
Understood? Okay. Yes. We are always checking A, right? That is parameter. Yes. A is equal to B is equal to C. Yeah. But then फिर कोई जैसे कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर होता है उसमें पता कैसे चलेगा कि See. There's a two thing that I want to discuss in basic concept after that, after that article. But here I am telling you, the first thing is that the Miller indices we are discussing here is just for the orthogonal vector, means orthogonal lattice. Orthogonal lattice, what you have? Cubic, tetragonal, and orthorhombic. Cubic है, tetragonal है, orthogonal means what? Orthogonal means alpha, beta, gamma should be equal and should be 90 degree. Okay. So here we are discussing the Miller indices just for our, means you can say the axis which should be the mutually perpendicular to each other. बाकी सारे lattices में क्या हो जाता है? If you see the remaining other Brave lattice like the hexagonal close pack. So in a hexagonal close pack you can't apply the idea of this Miller indices concept. Okay. So if means I arrive to your question that yes, in the cubic system, A is equal to B is equal to C. In tetragonal, C, whether in all discussion we have only three type of structure, right? Cubic, tetragonal and orthorhombic while discussing the Miller indices. Cubic की तो हमने बहुत सारी बातें कर ली. A is equal to B is equal to C. If you see the homework clearly, I gave you a question where all the three lattice parameter were different. Okay, so that was the real example. Yes, you are right. Lattice parameter could also be different, but we have to follow just one simple relation. What? Lattice parameter divided by the intercept. आपको confuse होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. this question how will we get to know that whether this Miller indices are given for cubic or Because I am saying this is the cubic lattice. Because I am saying this, they see whether when you will get the system, you will get the property of that system. आपको पता होगा कि ये cubic है, या tetragonal है, या orthorhombic है, जो भी है वो आपको पता होगा पहले से ही. Here we are discussing all about the cubic lattice. Okay? Okay. Now come to this question 632. Anyone had find out? Anyone has find out or draw the planes? Okay, let's see. 632. First of all, yes, that's what I am telling you, guys. See, अगर ऐसा कुछ आ जाए, if you got this type of Miller indices, 632. While seeing this, see, until now, अभी तक हम क्या कर रहे थे? 1 1 0 और 1 bar 1 0 ऐसे में deal कर रहे थे. But if you see this 2 3 and 6, if you are going to draw according to this Miller indices, you will reach in the next level, means in the next unit cell. So what I told you, make it the least integer. First of all, make this as the least integer. So how can you make the least integer here? Basically we have to draw the plane now. We have to draw the plane, and the idea is all about just divide all the three number by the biggest number among these three. Just divide all three number by the biggest number among these three. So it will become how much? 1, 1 by 2 and 1 by 3. ऐसा हो जाएगा कुछ? Or you can say I am taking 6 as a common. You can say I am taking 6 as a common. बात क्लियर है? सी, मैंने आपको कल बताया था ना कि इस तरह का जो प्लेन होगा, दिस प्लेन विल बी कॉल्ड एज अ पैरेलल प्लेन्स. So while drawing the 632, if we are able to draw 1 1 by 2 1 by 3, then it will be the equivalent to this 632. Understood? तो बात समझ रहे हो आप? भाई हमें 632 का प्लेन ड्रॉ करना है. But if somehow if you are able to draw the plane for 1 1 by 2 and 1 by 3, then this plane will be parallel to this plane. हमें पता चल जाएगा, okay, this will be our plane. Okay, so now basically the whole idea is we have to draw this plane 1 1 by 2 1 by 3. हमें क्या ड्रॉ करना है? 1 1 by 2 and 1 by 3. We have to draw this plane. So let's draw. It should be a y. This is our x,
and this is Z. This should be origin. Okay. Now intercept on A कितना होगा? Here, okay, at a distance A, and this will be at a distance y at a distance a by 2 and z at a distance a by 3. ठीक है भाई, clear है? On a x axis, what will be the intercept at a distance A? If you are taking side of the cube is A, then what will be the intercept at a distance A? At y axis, the intercept will be at the half at a by 2, and on the z axis it will be a by 3. So this will be your plane. This will be your point. ठीक है? क्या हो गया? अरे निकाल लो. ओके ओके, इंटरसेप्ट निकाल लो जरा. देखो देखो whether you are able to find out the intercept or not. See, A on scale करते हैं ना, तो intercept A, 2A और 3A आना चाहिए. let's see. H is to K is to L. Okay, lattice parameter divided by the intercept. Okay, and intercept is OA. Actually, this is OA. Is to A upon OB. Is to A upon OC. Right? Clear है? So the OA will be what? A upon H. OB will be A upon K. And OC will be A upon L. Okay, intercept is coming out with 1, 2 and 3, right? Intercept कितना आ रहा है इसका? A, 2A and 3A. ये कैसे हो सकता है? See, this is about the Miller indices, right? So H, K and L. H will be 1. It should be, K should be 1 by 2. And if you guys take as this complete, अगर इसको पूरी तरह से ऐसे ही ले लो H K L को. इसलिए हम पैरेलल नहीं कर सकते. Sorry? इसलिए इसमें हम पैरेलल नहीं कर सकते. हाँ. हाँ आना तो यही चाहिए, आएगा भी. एंड द इंटरसेप्ट विल बी, बिल्कुल. बट व्हाई द इंटरसेप्ट इज नॉट कमिंग? द मेन क्वेश्चन इज दिस. एक्चुअली इंटरसेप्ट आ जाना चाहिए था ये. व्हाट? हाँ हाँ, वही मैं भी कह रहा हूँ. एक्चुअली yes, you are right. Just put it directly H means 6, 3 and 2. अगर हम ऐसे लेते हैं तो फिर मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, right? If we see the H, K and L, so the intercept A by means 6 and it will be A by 3 and it will be A by 2. That will be our intercept. Okay, 1 by 6, 1 by 3 and 1 by 2. Okay, this will be our intercept. This will be our intercept, not that one. Okay, yes, you are right. This will be our intercept. A by 6, A by 3 and A by 2. No need to go there. Okay, अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपको पैरेलल प्लेन्स ही मिल जाएंगे. But now you can draw this A by 6, A by 3 and A by 2. ये तो easily draw हो सकता है ना भाई. x axis पे आप A by 6 तक आ जाओ. A by 6 will be somewhat here. See, I am drawing again here. Wait. मुझे लग रहा था अगर मैं पैरेलल कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाना चाहिए, बट उससे भी हो जाएगा. ओके, सी, yes, it will be parallel to that one. It will be parallel to that one.
आप लोग अपने नोटबुक में ड्रॉ करो उसको, देखो a/6, a/3 एंड a/2 ड्रॉ करके देखो हो रहा है, अब तो हो जाना चाहिए इजिली। ओके, so this is y, this is z, this is x, okay, and this will be our origin. At what distance is cutting the x-axis? a/6, so you can take a/6 means at what distance, here somewhat here, जो भी है ठीक है, प्लेन बनाना है ले लो अपने हिसाब से। y पे कितना पे कट कर रहा है, a/3 पे, let's suppose it will be somewhat here, and at the z-axis it is cutting at the half, यहाँ पर, so this will be your plane, this will be your plane, कुछ ऐसा प्लेन आएगा, ठीक है, क्लियर है सबको? ओके गुड, हाँ ओके, so this is some practice question regarding the second type of question, the second type of problem, when the Miller indices will be given and we have to draw the plane. Okay, now let's discuss some basic concept regarding the Miller indices, then we'll move further. Just write down the heading, basic concepts or basic points. You can write down as a basic point, basic points. Okay, first of all the notation. See, there is a two type of crystal, means two type of things are there. First is crystallographic planes, which we were discussing yesterday and today, and the second type of thing is crystallographic direction. Okay, I'm writing down here, please write down everyone these things. First thing is crystallographic planes, and the other thing is crystallographic direction. Okay, more or less both do the same work, but there is some difference in the notation also. Let's see what are the differences. See, we will discuss later on. क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन अभी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले प्लेन जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में देखते हैं। प्लेन्स को कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने अभी तक? प्लेन्स का मिलर इंडिसेस, द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन वी हैव राइट लाइक दिस, HKL in this bracket, HKL in this bracket, it will represent the set of planes. What it represent? It will represent the set of planes. Okay, and I will give you the example, don't worry. It will represent the set of planes. And one thing I also told you, that the family of planes, and the family of planes represented in this curly bracket, HKL. This represent the family of the planes. Okay, it represent the family of planes, right? Now set of planes क्या है, family of planes क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं. Let's suppose first let's talk about the set of planes which you know, which means आप इसको जानते हो, कल से आप इसी की प्रैक्टिस कर रहे हो. Let's suppose we have the Miller indices as 1 1 1. Other Miller indices is 1 bar 1 bar 1 bar. Other one is 2 2 2. Other one is 2 bar 2 bar 2 bar, and many other, means infinite number of planes will be there na. 1 2 twice 2 4 8. Okay, so this could be the infinite number of planes is there. So these type of plane which are parallel to each other, these are called the set of planes. What are they called? This is called set of planes. आप ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होना. This is called the set of planes. What are the main property of the set of planes? Set of planes की main property होती है that all these planes will be parallel to each other. Plane will be parallel to each other. All these planes will be parallel to each other. Okay, but if we talk about the family of the planes, if we talk about the family of the planes, see, if you talk about the family of planes, let's suppose we have one Miller indices at 1 1 0. Okay, so
विद इंक्लूडिंग ऑल दिस थ्री इंटीजर, इन तीनों इंटीजर का यूज करके जितने भी इसके कॉम्पोजिशन बन सकते हैं in the positive and in the also in the negative direction. I'm repeating again, while using these three integer, the number of combination can be made in the positive direction, also in the negative direction, all that lie in the same family, like 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 bar 1 bar 0 1 bar 0 1 bar 0 1 bar 1 bar, all 3 6, ये जो 6 हैं, all 6 will lie in the same family. It will lie in the same family. It will lie in the same family. अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो क्या सर फैमिली के जो प्लेन्स है पैरेलल नहीं होंगे? Okay, what I told you that the set of planes will always be parallel to each other. वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे. But whether the family members of any plane, whether this will be parallel or not, so the answer is it may be or may not be. It is not means always be like that all the family members should be parallel to each other. ऐसा नहीं है. Okay, it may be or it may be not. If you see, अगर आप कुछ इनको देखो, means if you see this one 1 0 1 and 1 bar 0 1 bar, these two are parallel na? Okay, just multiply with a minus sign, it will convert into this, like it will be parallel. But it is not always true. Just suppose 1 1 0 and 0 1 1, it cannot be parallel to each other. How it will be parallel to each other? 1 1 0 and 0 1 1. समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है? So are you able to understand the difference between the set of planes and family of planes? Okay, see, I am repeating again, the main difference between the set of planes and family of plane is the member of the set of planes will always be parallel to each other. You can see here 1 1 1 1 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar 2 2 2 2 bar 2 bar 2 bar. Similarly 4 4 4 4 bar 4 bar 4 bar, all these plane will be parallel to each other in the infinite extension. अब इसकी गिनती कितनी है? If you want to say, अच्छा सर कितने होंगे set of planes, so the answer is infinity. भाई आप बिल्कुल भाई कितने होंगे आप खुद सोचो ना. If the lattice is extended up to the infinity, so there could be the infinite number set of planes ना. But there is a restriction in the family. फैमिली में इनफाइनाइट नहीं होंगे. 1 1 0 मींस 3 नंबर इसके फिक्स हो गए, 3 नंबर फिक्स हो गए इसके. अब आप यू कैन ओनली मींस इंटरचेंज दैट पोजीशन. आप इनको इधर कर दो, इनको इधर कर दो, इस तरह से आप जितने कॉम्बिनेशन बना लोगे, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यू कैन मेक, दैट विल लाई इन द फैमिली. एंड मींस 2 ऑफ द प्लेन्स मे बी पैरेलल और मे नॉट बी पैरेलल. क्लियर? किसी को कोई डाउट? एनीवन? Yes? I am saying, okay, I am writing down here. समझ में आ गया ना सबको? Everyone understood? The concept of set of planes and family of planes, also the notation? Okay, now I am writing down, just note down that things. So, set of planes. Set of planes. The first property is their notation. Notation will be this one in this bracket, like H, K, and L. And please remember everyone, don't use comma between H, K, L. जैसे आप इसमें comma लगा दोगे ना, ये Miller indices coordinate में convert हो जाएगा. Okay? Don't use comma here. It will be without comma. That is a notation. Okay? And the second point is, all the members, or you can say all the planes will be parallel to each other. All the planes will be parallel to each other. Okay? But in the family of planes, the notation is
नोटेशन इज दिस कर्ली ब्रैकेट, ओके, इसमें आपको HKL डिनोट करना है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज टू प्लेन्स may or may not be parallel to each other. Okay, two plane may or may not be parallel to each other. Clear है? Clear है सबको? Okay, yes. All set of plane can be called as a Sorry? कैसे आप बोल सकते हो? अभी अभी तो मैंने बताया ना। अरे इसके एग्जाम्पल आप देखो, इसके एग्जाम्पल देखो। व्हाट आई टोल्ड यू, 1 1 1 2 2 2 1 बार 1 बार 1 बार 2 बार 2 बार 2 बार। इसका एग्जाम्पल देखो क्या बताया था, 1 1 0 का एग्जाम्पल क्या बताया था, और क्या था 1 0 1 0 1 1 1 बार 0 1 1 बार 0, ओके, 1 बार 0 1 बार 0 1 बार 1 बार, ओके। भाई कैसे आप कह सकते हो? मैंने यहां पर पहले आपको एक चीज बता दी ना मैंने कि टू प्लेन्स मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, टू प्लेन्स मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर पैरेलल नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अगर वो सेट है तो फैमिली भी कहलाएगा? ओके, हाँ हाँ बोलो। So that's what I am telling ना, so see that's what I am telling ना। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है, if there is any scenario, then it may be the set of planes could be the family, maybe it could be the set of planes, it could be the family of the planes, like see आप यहीं पे एग्जांपल देख लो ना, देखो कंफ्यूज मत हो, इस 6 के एग्जांपल देखो, all these 6 कोऑर्डिनेट, इसको ध्यान से देखो, ये फैमिली बन गई, these are the family। अगर हम इसमें से सेट निकालना चाहें तो बिल्कुल निकल आएगा, सी दिस वन एंड दिस वन, क्या ये दोनों सेट नहीं हो गए? 1 1 0 एंड 1 बार 0, सो बिल्कुल हो सकता है, ओके। इफ देयर इज अ सेट देन इट कुड बी मे बी द फैमिली और मे नॉट बी द फैमिली, ओके, यस। प्लेन हम लोग लिखेंगे ना तो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करेंगे ना फिर हाँ बिल्कुल यही करना है, साइन के देखो बस इतना आपको ध्यान रखना है, जो जस्ट मीन्स यू हैव टू बी अटेंटिव लाइक दैट, कि जो 3 नंबर है ना, 3 कोऑर्डिनेट मीन्स नॉट कोऑर्डिनेट, जो 3 नंबर है, जो 3 इंटीजर हैं उस प्लेन के, उन्हीं की मदद से, ओनली विद दैट एंड विद द नेगेटिव साइन ऑफ दैट, हाउ मैनी कॉम्बिनेशन यू कैन मेक, दैट्स इट। कोई अदर मेंबर नहीं आना चाहिए। 1 1 0 है तो इसके साथ आप सिर्फ 2 और ले सकते हो, दैट इज -1 -1, और कुछ नहीं आएगा, ओके। 1 1 0, अब इसका नेगेटिव और क्या हो सकता है? -1 -1 -0, -0 का थोड़ी ना, दैट इज 1 1 0 -1 -1। पूरी फैमिली में बस इतने ही मेंबर्स होंगे, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड द फैमिली ऑफ प्लेन्स। क्लियर? यस यस। किसमें आएगा ये सब? हाँ बिल्कुल 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 आएगा। आई जस्ट टेक अ वन एग्जांपल, बिल्कुल आएगा। आप इसको देखो, दिस कुड आल्सो बी द सेट, ये भी तो सेट होगा ना। मैंने क्या कहा? द जनरल स्टेटमेंट इट कैन बी पैरेलल और कैन नॉट बी पैरेलल, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके भाई बिल्कुल। आप कह रहे हो, मैं समझ गया, 0 1 1 0 1 बार 1 बार, आपने इसको क्यों नहीं लिया? अरे मैंने एक एग्जांपल लिया, आप दूसरा ले लो, क्या प्रॉब्लम है, ओके। बट अगर आप ये बताओ, क्या इनका कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? 1 1 0 एंड 0 1 1, क्या आप इनको कह सकते हो कि दे आर द सेट ऑफ प्लेन्स? नहीं कह सकते ना, बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, आर दे? नो, ओके। सो अब हाँ, advantage of parallel planes is you can see in the XRD, X-ray diffraction,
Okay, when you do the XRD, see, Miller indices, X-ray diffraction itself, structure factor, form factor, all these discussion have a direct significance in the XRD. भाई XRD में जब आप करते हो, आपको एक भाई प्लेन दिख जाती हो कि इस पे पीक मिल गया हमें. अगर किसी ने XRD किया हो तो वो जान जाएगा. जैसे आप करते हो ना, you are able to see, okay, this is the plane. So how will you denote that plane? भाई आप प्लेन तो दिख गया, जैसे XRD आप कह रहे हो आपको कंप्यूटर पे ओके दिस इज अ पीक आपको दिख गई. बट अगर मिलर इंडिसेस नहीं होता या अगर प्लेन्स की बात ही नहीं हुई होती तो आप कैसे दिखाते हो, दिस इज अ 110 प्लेन एंड दिस इज 011 प्लेन. जैसे ही लिख के आता है ना 110 प्लेन, दैट मींस 110 भी पीक पे है और इसके साथ 1 बार 0 2 2 0 दिस ऑल विल बी इन द पीक. ये है इसका सिग्निफिकेंस. क्लियर है? Okay, so basically all these have significance directly in the X-ray diffraction. Okay, let's go ahead. Before going to the crystallographic direction concept, one thing I want to tell you, just write down the very small things, but once the question has came from this concept, angle between two planes. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. और हमेशा ध्यान रखना है जो एंगल की मैं बात करने जा रहा हूं ना, दीज आर फॉर द ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ, ठीक है ना, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर जो हम बात कर रहे हैं ना, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरॉम्बिक, बस उसी के लिए ये एंगल का फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है, बेसिकली वेयर द ऑल थ्री एंगल विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, यस. हाँ, क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मैंने लिखा तो है, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स. ओके, आई कैन राइट क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स. yes, it is the angle between two crystallographic planes. Crystallographic planes. Okay, so the angle comes out, see, this is simply a dot product. Let's suppose the first coordinate is h1 k1 l1, ये एक वेक्टर है h1 k1 l1 का, and the second is s2 k2 and l2. okay, and this is our o and this is angle theta. So अगर आप cos theta करते हो, just from the very basic dot product concept, a vector dot b vector is equals to mod a mod b cos theta. So from there you can find out cos theta is equals to what? I am writing out the direct relation here, h1 h2 plus k1 k2 plus l1 l2 divided by root under h1 square plus k1 square plus n1 square multiplied by under root h2 square plus k2 square plus l2 square. Okay, this will be the relation. Means if you have to find the angle between the two planes, you can directly use this relation. Okay, this is quite important. एक या दो बार question आया हुआ है. So you can get the question from this concept also. There will be two planes will be given. Let's suppose 111 and 110. Two plane is given, and they have asked for what will be the angle between these two planes. So the angle we'll find out by this relation. Okay, I am giving you an example here. Just find out. Okay, ये हो गया सबका? It is clear for everyone? Okay, so it's quite trivial. Just it's अच्छा ये कहाँ से आ रहा है, किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं कहाँ से आ रहा है? जस्ट अ डॉट प्रोडक्ट, आप करके देख लेना कॉपी में, ठीक है? जस्ट अ डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा, वही से आ जाएगा. So just write down one question. The angle between 111 and 112 direction. The question is, find the angle between 111 and 112 planes. 111 and 112 planes. Anyone mics is on? In cubic crystal. In cubic crystal. ओके, चलो बताओ सब लोग, सॉल्व करो कॉपी में, देखो कितना आएगा. 111 एंड 112, इन दोनों के बीच का एंगल.
सॉल्व करो सब लोग, देखो कितना आ रहा है। यस। एक साथ मतलब प्लेन्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना। हाँ। यस। एक साथ की क्या बात है भाई, प्लेन्स तो इमेजिनरी चीज है ना, आप बनाने चलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन बन जाएंगे यूनिट सेल में। मैं अगर आपसे कहूं, इफ आई टोल्ड यू देयर इज अ होमवर्क फॉर यू गाइस, इफ आई से देयर इज अ क्यूबिक लैटिस, जस्ट ड्रॉ 1 1 1 and 1 1 2 planes. Plane means what? Plane means imaginary lines. Plane ऐसा नहीं है कि जब देखोगे तो आपको प्लेन दिखेगा, अच्छा ये गया प्लेन। नो, प्लेन इज जस्ट अ इमेजिनरी लाइन। ये तो हमने बनाया ना, ओके इनको जोड़ दो 3 डायमेंशन में, इट विल बी अ प्लेन। सो ऑब्वियसली एक टाइम पे 2 प्लेन प्रेजेंट होंगे, और क्या उसमें कोई वो थोड़ी ना है। एक टाइम की इसमें बात कहां से आ गई? इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। यस। ओके, मुझे लगा डाउट है, उनका डाउट क्लियर हो रहा था ना। हाँ, तभी आएगा, तभी आएगा, तभी आएगा। हाँ तभी आएगा, मैंने बोला ना, सबसे पहले मैंने यही बोला, ये स्टेटमेंट मैंने बोला है। ओके, जब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे, मतलब ऑल द 3 वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर ईच अदर, तभी ये जो रिलेशन है ना वो होल्ड करेगा। ओके, तो आपके सिलेबस में इसी की बात होती है, डोंट वरी। चलो बताओ कितना आ रहा है एंगल। हाँ, सॉरी, नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूं टेट्रागोनल क्रिस्टल तो भी हो सकता है। मेन फंडा इज अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है कि नहीं है। लैटिस पैरामीटर से कोई मतलब नहीं हमें। भाई लैटिस पैरामीटर क्या है भाई, डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। ऑर्थोगोनल है कि नहीं एक दूसरे के, ये देखना है। तो हम ये देखते हैं ना, हमने ब्रेवे लैटिस में इस चीज को डिस्कस किया था ना, वी हैव डिस्कस्ड द ब्रेवे लैटिस दैट द क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। इनके लिए भी यही होती है, इनके लिए भी यही होती है। ओके, डिफर कहां करते हैं? वेरी डिफर लैटिस पैरामीटर्स में। a is equal to b is equal to c, a is equal to b not equal to c, and a not equal to b not equal to c. so लैटिस पैरामीटर्स हमें कोई मतलब नहीं है उतना। ओके, बेसिकली हमें देखना है कि ऑल द 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और नॉट। अगर हैं तो हम मिलर इंडिसेस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, हम क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन डायरेक्शन का लगा सकते हैं, हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस का भी रिलेशन यूज कर सकते हैं, जो हम करेंगे। ओके, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द ऑर्थोगोनली, मींस ऑल द 3 वेक्टर वी शुड बी ऑर्थो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है? व्हाट इज द आंसर? एंगल कितना आ रहा है? अरे थीटा में बताओ, एंगल पूछा हूँ, कॉस इन 19.4 is correct answer. The theta will be 19.4 or whatever, is it 19 point something will be degree, इतने डिग्री होगा। ओके, क्लियर है? ओके, सो व्हाट्स द टाइम? ओके, लेट्स डिस्कस, अभी है टाइम हमारे पास। नाउ वी आर गोइंग टू स्विच our concept, means our discussion, to the crystallographic direction. अभी तक हमने क्या पढ़ा? What we have studied till here, that is crystallographic planes. हमने पढ़ा था crystallographic planes, crystallographic planes. Okay, but now we are going to discuss the crystallographic direction, crystallographic directions. Okay, I don't know it is useful, means important for you guys or not, because अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया है,
एक बार मुझे क्वेश्चन दिखा था IIT जैम में, बाकी मुझे किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं मिला डायरेक्शन से, बट यस लेट्स डिस्कस, वो कर लेते हैं. सो व्हाट इज क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन ऑल अबाउट? भाई प्लेन्स में क्या कर रहे थे, व्हाट वी आर डूइंग इन द प्लेन्स. प्लेन्स हमें क्या शो कर रहा था, ओके दिस इज द प्लेन एंड इफ दिस प्लेन इज एग्जिस्ट दिस विल बी द देयर इज सम नंबर और इंटीजर, व्हाट वाज द मिलर इंडिसेस. मिलर इंडिसेस हमें पता चल जाता है तो हम कहते थे ओके ये ऐसा प्लेन है यहाँ पर. सिमिलर डिस्कशन है, इट इज अ क्वाइट रिजेम्बलेंस दैट क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन के साथ. कुछ चीजें अलग हैं, देयर इज सम डिफरेंस एंड द डिफरेंस लाई इन नोटेशन. नोटेशन में थोड़ा डिफरेंस है. लाइक जब कभी ऐसा आपको देखने को मिल जाए, इफ यू आर एबल टू सी लाइक दिस नोटेशन बिग ब्रैकेट, तो समझ जाना यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है. ओके इफ यू गाइस सी दिस ब्रैकेट, that is if HKL is written in this bracket, then you can say okay here the means complete discussion of crystallographic direction is going on. नोटेशन से फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रैकेट आप लगा दोगे. ओके यहाँ पर फर्क पड़ता है. और ये तो हो गया सेट ऑफ प्लेन्स के लिए, दिस इज फॉर द सेट ऑफ प्लेन्स. एंड सिमिलरली द फैमिली ऑफ प्लेन्स वी हैव डिफाइंड फॉर द प्लेन्स. So here the family of direction को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ यूं. Okay, it will represent the family of direction. Family of directions. ठीक है ना, समझ में आया? प्लेन्स में क्या हो रहा था, what was in the planes? There is a small bracket for denoting the HKL. Here we will use the big bracket for the set of planes and this bracket for showing the family of direction. Set of direction, not plane. It should be the set of directions. Okay, it should be the set of direction. Set of direction and family of direction. Clear है? जैसे कि मैं आपसे कहूं, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं. आई एम टेलिंग यू एग्जांपल हियर. See, everything will remain same. Y, Z, and X. Okay? If I say, अगर मैं कहूं there is a direction given, सिर्फ ये डायरेक्शन दी हुई है, this is the origin of and this direction is given. What will be the Miller indices for this direction? इस डायरेक्शन के लिए मिलर इंडिसेस क्या होंगे? देखो यहाँ पर ऐसे डिस्कशन होना है. ओके इससे ज्यादा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग मोर देन दैट. डायरेक्शन मींस डायरेक्शन को हम ऐसे ही शो करेंगे, इस पूरे में डायरेक्शन को बस ऐसे ही शो करेंगे एरो से. ओके प्लेन्स की बात हो रही थी वो अलग था. हियर वी विल डिस्कस दैट डायरेक्शन. इफ यू टॉक अबाउट दिस डायरेक्शन एंड ओरिजिन, आवर ओरिजिन इज हियर. सो हाउ विल यू फाइंड द मिलर इंडिसेस रिगार्डिंग दिस डायरेक्शन? See, there is a simple thing. Just find out the coordinate of head of that arrow and coordinate of tail that arrow. जैसे ये है, इसका head ये हो गया, this is the head and this is the tail. Okay? So the Miller indices, simple. The Miller indices, that is big bracket HKL will be equals to coordinate. Here I am using word coordinate. Don't worry. Coordinate of head H minus coordinate of tail. बात समझ में आ रही है? Let's find out the head और tail का coordinate बताओ कितना होगा? What will be the coordinate of head and tail? Head का coordinate कितना होगा? 0 is 0 means 0 1 0. Coordinate means 0 1 0. Okay? Head का coordinate कितना होगा? भाई clear है सबको? Everyone is clear? 0 1 0. How it is coming 0 1 0? At what distance you are going in x direction while reaching to this point? इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना मूव कर रहे हो, वही तो बताता है ना कोऑर्डिनेट आपका. एक्स एक्सिस में आप कितना मूव कर रहे हो? बिल्कुल नहीं मूव कर रहे हो. यू आर नॉट मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, यू आर मूविंग a times, means what the distance, a distance आप मूव कर रहे हो, that is 1, and you are also not moving in the z direction, so the coordinate of head will be 0 1 0. What will be the coordinate of tails? टेल का कोऑर्डिनेट कितना होगा? हाँ 1 1 0. yes obviously. भाई यहां से यहां आने के लिए from there to there, from this to this point, what distance you will cover?
you first will cover a distance on the x-axis, then you will cover a distance on the y-axis. You will reach there. The coordinate of tail will be 1, 1 and 0. So what will the Miller indices? The Miller indices will be HKL in a big bracket, head minus tail, 0 minus 1, that is 1 bar, 1 minus 1, 0, 0 minus 0. This will be your Miller indices. Simple. बस यही करना है. 1 bar 0 0 will be your Miller indices. If I say what will be the Miller indices of this direction, इस direction का Miller indices बताओ कितना होगा? Please tell everyone. What will be the direction? What will the Miller indices of this direction? कितना होगा? सबसे पहले coordinate find कर लें. First of all, let's find out the coordinate of head and tail. This is head. This is tail. What will the coordinate of head? 0 0 1. It's quite simple. You are not going in x direction. You are not going in y direction. While for reaching this point, you are just going in z direction for reaching this point. So 0 0 1 is the head coordinate. Tail का coordinate कितना होगा? What will the coordinate of tail? हाँ? 1 1 0 1. Okay. देखो. A distance are move किया on x axis, a distance in the z axis, and you are not moving in the y axis. Y axis पे आप move नहीं कर रहे हो. So 1 0 and 1. So what will the Miller indices? Just minus both the coordinate. The HKL will be what? 1 bar 0 0. कुछ दिखा? नया सा क्या पुराना ही है? कुछ दिखा? कुछ दिखा दोनों में, यहाँ और यहाँ? Have the same Miller indices. They are the same. देखो भाई इसका भी Miller indices 1 bar 0 0. 1 bar 0 0. Why? Because they are both the parallel to each other. देखो ना. Similarly, अगर इसका भी आप find out करो, find out the Miller indices of this direction. इसका find out करो. देखो कितना आएगा for this direction. इसका भी 1 bar 0 0 आएगा. This will also come out to be 1 bar 0 0. What will the coordinate of head? Head का coordinate कितना होगा? What will the coordinate of head? 0 1 1. भाई x axis we are not moving the x axis. You are moving a distance on the y, a on z. So coordinate of h will be 0 1 1. What will the coordinate of tail? 1 1 1. Okay, the coordinate of tail will be 1 1 1. What will be the Miller indices? What will be the Miller indices? 1 bar 0 0. देख रहे हो ना आप, तीनों के मिलर इंडिसेस सेम है. क्यों सेम है? बिकॉज ऑल थ्री आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, क्लियर है? ओके, सो दिस, हाँ, एनी क्वेश्चन? ओके, I will provide you some question for the practice of this direction, means the crystallographic direction. I will send you like I sent you yesterday. Okay, and after this there is a small topic of interplanar distance has remained, and we will cover tomorrow, and we will start the XRD, X-ray diffraction. Okay, okay, okay. Please guys, everyone, please follow my instruction. Please, it's just for you. आपके लिए ही है. See, I just asked the authority and they were telling there is a means attendance is around 50%. 50 students की attendance है मेरी क्लास में, but what I got the answer sheet is around 15 or 16 only. What are doing other one? अब बाकी लोग क्या कर रहे हो? ठीक है ना, प्लीज फॉलो करो, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो. जो भी होमवर्क दिया जा रहा है ना, ये आपके लिए ही है, हम लोग के लिए थोड़ी ना है. प्लीज फॉलो करो. ओके, कल का होमवर्क और जो मैं आज भेजूंगा प्लीज कंप्लीट करके मुझे सेंड करो. ओके, मिलर इंडिसेस बहुत इजी टॉपिक है, बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं स्टूडेंट से. दैट्स व्हाई आई आस्क यू फॉर द प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे इसका उतना ही अच्छा, उतना ही ज्यादा परफेक्ट आप बनोगे. ओके, सो प्लीज डू. ओके, यस, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? अच्छा. ओके, विल डिस्कस इन द व्हाट्सएप ग्रुप, डोंट वरी. हम डिस्कस कर लेते हैं वहाँ पे, मैं आपको सॉल्यूशन उसका भेजता हूँ. वो वही है ना जो मतलब क्या निकाल रहे थे, इंटरप्ले मींस लैटिस पैरामीटर निकाल रहे थे ना.
कोई बात नहीं, देख लेते हैं, डोंट वरी, देख लेते हैं, आई विल सेंड यू। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, sir. Yes, sir.